So, hey guys, Crickbucks is back, and today we are back with the weekend bonanza because we thought of covering four games together. वैसे भी आज वाले जो दो गेम थे वो बहुत ही बेकार हुए हैं, तो एनीवेज हम पहले कल के गेम्स की बात करते हैं। दिल्ली मुंबई, जो लग रहा था कि मुंबई एटलीस्ट दिल्ली को तो हरा ही देगा, लेकिन दिल्ली के पास एक सरप्राइज वेपन था, जेक फ्रेजर मैकगर्क। और उसने जो एक्सप्लोर किया है, उसने तो बुमराह बुमराह किसी को कोई इज्जत दी नहीं भाई। और बड़े ही बदसलूकी करी है हर बॉलर के साथ उसने। और काफी मतलब बहुत ही बढ़िया बैटिंग कल्चर वो प्रमोट कर रहा है दिल्ली में। बिकॉज बिफोर जेक फ्रेजर मैकगर्क दिल्ली वाज 1-4, एंड आफ्टर जेक फ्रेजर मैकगर्क दिल्ली हैज बीन 4-1. So I guess that's the change of approach they needed, and it's high time they should let go Warner off because these guys need to move on now. Like we can still, want Rohit, Kohli, and Dhoni to play because those guys are Indians and this is Indian Premier League. But I don't think we can hold off like every person, like Warner, Fab du Plessis, and all these guys. So that was a one game. But Karan, I'll just keep it simple for that one because of वो game कल था, and then if you will able to recollect or not. But do you think Mumbai is gonna make any run or any playoffs this time? यार अगेन मुंबई's बैटिंग इज नेवर इन क्वेश्चन एंड कल भी उन्होंने दे गेव अ गुड फाइट बट आई Yeah, फील लाइक एक तो कैप्टनसी एंड द बॉलिंग चेंजेस व्हाट इज हैपनिंग जो मैंने पिछले मैच में बोला था आई डोंट ट्रस्ट देयर बॉलिंग एंड दैट्स व्हाट्स हैपनिंग तो उसकी वजह से दे गोना लैग एंड दैट्स व्हाट्स शोइंग ऑन द ग्राउंड एज वेल सो yeah, बैटिंग में तो आई थिंक कल दे डिड व्हाटएवर दे कुड बट 257 हर रोज चेज नहीं हो सकता तो दैट्स व्हाई दे लॉस्ट द गेम but yeah. bowling is a big concern, and with this bowling, I highly doubt. So I don't want to give them a chance. But yeah, अगर एक आधी गेम में बैटिंग फिर से कोई एक्सेप्शनल कुछ कर गई तो वो एक मैच जीत सकते हैं बट ओवरऑल जो उनका हाल है बॉलिंग का आई डोंट थिंक सो And how about Delhi? Do you think Delhi is gonna make playoffs? या दैट्स इंटरेस्टिंग बिकॉज दिल्ली का एक चीज आप अगर देखो मोमेंटम इस गेम है इस टूर्नामेंट का एंड बैटिंग वाज देयर ऑलवेज अ बिगर इशू अब Yeah, जेक फ्रेजर की आने की वजह से एक स्टेबिलिटी आई है बैटिंग में एंड टेक्निकली कल तो वो बिल्कुल ही टोटली नए ओपनिंग पेयर के साथ खेले हैं ओरल yeah, प्लेड एज वेल एंड दे बोथ डिड वेल तो अगर ऐसी पिचेस पे जहाँ पे फ्लैट ट्रैक्स हैं और ये यंग फियरलेस प्लेयर्स बैटिंग कर रहे हैं तो आई थिंक दे हैव अ गुड मोमेंटम ऑन देयर साइड playoffs I think it's still a long shot but I'm definitely sure ये लोग टक्कर देंगे आगे टीम्स को and Delhi is a team to watch out who can make upsets. so like the probability is कि उन्हें 3 out of 4 games जीतने होंगे, Mm-hmm. राइट? तो 3 out of 4 गेम्स में उनके जो नेक्स्ट 4 गेम्स हैं वो हैं कोलकाता नाइट राइडर्स, राजस्थान रॉयल्स, आरसीबी एंड लखनऊ सुपर जायंट्स. So It will be that's gonna interesting be, to watch. yeah, that's gonna be a tough one though. Yeah. पर But देखो यार अगर आपको प्लेऑफ्स में आना है तो यू कैन नॉट प्ले ऑन द नेम्स राइट अगर आपको यू थ्राइव टू बी एट द टॉप यू हैव टू बीट एवरीबॉडी और वो हमने एटलीस्ट इस आईपीएल में देखा है या कहीं भी आईपीएल में देखा है कि कोई भी टीम किसी को भी बीट कर सकती है ऑन देयर डे सो yeah, आई डोंट वांट टू डिस्काउंट दिल्ली बिकॉज आई थिंक मोमेंटम उनके साथ है दे कैन डेफिनेटली मेक इट टू द प्लेऑफ्स so you are saying Mumbai is strict no and Delhi is maybe. मुंबई मुंबई यार आई एम नॉट गेटिंग दैट फीलिंग प्लस वो ग्राउंड पे भी थोड़ा दिखता है व्हेन दे आर ऑन द फील्ड उस Yeah, दिन there are a lot of issues. There are a there's a lot of lot of issues. issues going on Yeah, Delhi is on a high उनको एक yeah. नया सक्सेस मिला है एंड दे आर राइडिंग ऑन इट that's why I'm trying to give them a chance but Mumbai I think there's a lot of things happening behind the doors which is showing on the ground as well. Perfect. Okay. And coming to the next game, I guess Lucknow batted really well, especially Rahul and Huda after losing 2 wickets in 2 overs. But still, man, Rajasthan is on amazing run this year. They are not going Yeah. to drop down. And then Butler got out, Jaiswal got out, Parag got out. But this time it was Sanju and Dhruv Jurel. DJ Yeah. came, DJ showed up that last night. सो डेफिनेटली सबसे पहले जो चीज हाईलाइट होने वाली है कि दोनों ऑडिशन दे रहे थे अपने वर्ल्ड कप स्क्वाड के लिए राहुल और संजू Yeah, राहुल ने अच्छा प्लेटफॉर्म सेट कर दिया था कि भाई देखो मैंने अच्छा स्कोर कर दिया एंड ऑल दैट स्टफ एंड सन आई रियली वांट कमेंड संजूज इनिंग्स क्योंकि उस यही हमेशा सबको प्रॉब्लम होती है कि भाई उसको स्टार्ट मिलते हैं एंड ही थ्रोज अवे कल yeah. उसने पूरा फिनिश किया एंड आई वाज लिसनिंग टू केविन पीटरसन ऑन द एयर एज वेल ही वाज सेइंग big players perform on big stages, but great players finish the game, and that's what he Mhm. has done. So I think उसकी वजह से उसके chances definitely strong होते हैं World Cup squad के लिए. बट डोंट यू थिंक कि केविन पीटरसन वो बात ध्रुव जुरैल के लिए कह रहा था?
दोनों के लिए हो सकती है, बट इवन That's जुरेल what इज अ I, गुड प्लेयर यार, टेस्ट मैच में उसने भी किया है। maybe not for this World Cup, but maybe Jurel is telling the next one is me. And definitely should be right, the way this Yeah, guy has confidence and technique, I think वो भी लॉन्ग रन में इंडिया का पोटेंशियल है, एंड इफ अ प्लेयर इज प्लेइंग टेस्ट मैच क्रिकेट आई थिंक वो कोई भी फॉर्मेट खेल सकता है, right? yeah, But for sure. coming back to Rajasthan and Lucknow game, yeah, I think Lucknow set up very good total. But वही है, वो दो players ने जो temperament दिखाया है and character दिखाया है, उसकी वजह से they won the game. But did you enjoy the moment of the game when Mishi Bhai came onto the field and took a wicket as well? मिशी भाई बाउंस हो रहे थे हर जगह से, आगे पीछे सब, but he took a good wicket I guess. And I think किसको बटलर को आउट किया है, Parag, जायसवाल को आउट किया, Parag, पराग को, Parag, सॉरी या पराग Parag, को Parag. आउट किया है। तो मिशी भाई वाज डेफिनेटली हैप्पी एंड ही सेइंग कि अभी मेरे को राइट ऑफ मत करो, एक और आईपीएल खेलना मुझे। Mishi Bhai can play for like 10, 20 IPLs more, man. He just have to बट bowl four एक्सपीरियंस काउंट्स overs. राइट, क्योंकि यूजी बोल्ड ऑन द सेम पिच एज वेल। बट जो Yeah. मिशी भाई वेरिएशंस दिखा रहे थे अपनी, एंड ही हाउ ही यूज द लॉन्ग साइड ऑफ द पिच, ऑफ द ग्राउंड, आई थिंक वो बड़ा अच्छा एक एक्सपीरियंस देखने को मिला हमें डिस्प्ले में। Yeah, exactly. So I guess Rajasthan is still like invincible. वो तो मैं stupid question होगा if I'll ask you कि Rajasthan will qualify or not because I know they will. आई थिंक But एज एन आरसीबी फैन मैं प्रे कर रहा हूँ राजस्थान सारे मैच जीत जाए अपने। yeah, that's the least you can do, obviously. And एग्जैक्टली, still you are telling that सारे मैच जीतने हैं आरसीबी को। yeah. So pretty much. So you have hopes. I get it. या What about LSG? Do you think LSG will qualify? They need to win 3 out of 5, यार and they उनकी are डेफिनेटली, सॉरी गो and अहेड, they गो are they are playing Mumbai Indians twice, then Kolkata, Sunrisers, and Delhi. इट्स गोना बी टफ, बट एक एक चीज जो उनकी अच्छी हुई है कि उन्होंने ट्रैवल ट्रैवल करते हुए मैच जीता है, which gave them confidence कि उनकी बैटिंग can score high as well. Leaving Yeah. So Stoinis and Yes. Rahul are showing intent, and Nikki P nobody have questions. जब उसका दिन होगा he can get you the match single handedly. तो I think LSG के definitely chances दिख रहे हैं। Okay. Fair enough. So LSG is like most like 70% qualifying, and Rajasthan is Yeah. making as well. Okay, now the tougher questions will start because the first game was today was RCB versus Gujarat, and Gujarat scored like 200 runs again. Sai Sudarshan showing his class. At Yeah. least if not T20s, I think he's ready for ODIs or Test cricket for India for sure. But Shah Rukh Khan also played like a Pathan knock, and he was good. But limelight was taken again by King Kohli because the shots he played, man, some of his shots, especially the one on back foot over extra cover, and Oh yeah. he knew it that there is a long off as well, and left arm spin and all that bullshit was going around. But bro, he didn't give anything. And the next ball he hit like against the spin over deep mid wicket. So that was fun to watch. And good thing was again, like we highlight this fact that cricket is played in partnerships. First 15 balls, Will Jacks was looking like a beer slogger. Yeah. He didn't have any clue which is the ball turning or not. But see, that's how experience plays off. Even he said in post-match presentation as well. Virat just said that just hold on, man, hold on. You'll start getting it. And Virat also said that we just needed one big over, and as soon as he got it, then I became my role changed, and then I just have to wait and watch Will Jack's innings. So that was Yeah. good to watch. And imagine that guy got his 50 at I don't know some time, और उसके 6 मिनट के बाद उसका 100 हो गया। It was that crazy. Bro, he was 15 of 15. Yeah, Next 25, he hit 85. he hit 85. Imagine. So that is So some that amazing shows the class stuff. of the player. That's why मैं पिछले साल से चीख रहा था भाई, Will Jacks is the player we should be Yeah, playing, right? And again ठीक है, हर एक टीम का एक अपना टाइम होता है, ऐसा नहीं है। तो now he has announced that, and I hope आरसीबी उसको लॉन्ग टर्म पर्सपेक्टिव में रखे। वैसे एज अ बैट्समैन है तो बैट्समैन इनको वैसे ही पसंद है, अगर कोई बॉलर अच्छा हो रहा तो उसको छोड़ देते हैं हम। तो बैट्समैन तो रख ही लेंगे अब। नहीं बट आरसीबी ने जस्ट अनाउंस किया है अभी क्या? कि वो लोग विशक, स्वप्निल सिंह, सौरभ चौहान इन तीनों को रिटेन कर रहे हैं और किसी को रिटेन नहीं कर फेयर इनफ, कोहली का भी नहीं बनता है। रहे। नहीं क्योंकि वो रन स्कोर कर रहा है यार, ही कैन Yeah, रिटेन। but coming back to कोहली यार, आई नो बड़ा बैकलैश हुआ, कभी कभी होता भी है, बट यार एक चीज देखनी पड़ेगी, द वे आज जो तूने शॉट्स की भी बात की है, आई थिंक दैट शोज दैट दैट पर्सन नोज हाउ टू अडेप्ट टू हिज गेम। वो या चेंज करना पड़ता है कंडीशंस के हिसाब से एंड ऑल, एंड आई एम हैप्पी कि वो गट्सी इनिंग्स खेली है उसने आज। इवन जो एक
पैर आगे निकाल के ही वाज फ्लॉगिंग टू मिड विकेट, वो भी उसकी कंसिस्टेंट शॉट्स नहीं है, बट ही वाज हम्म। प्लेइंग दोज. So this shows कि he is ready to adapt, and as after in the presentation he said that as well कि भाई मैं 15 साल हो गए मुझे खेलते हुए. You can talk about strike rates and everything, but I'm here to win games for my team. And अगर पार्टनरशिप मिलेगी तो he's the right person to be on the other side Yeah, of the ground जब जब पार्टनरशिप बिल्ड हो रही है. तो आई थिंक एनी टीम वुड लाइक टू हैव दैट, बट या ओवरऑल I आज think अच्छी गेम थी उनकी. this aspect we will cover more in our like Indian team podcast या as well. But Karan, the point is कि जो बात हो रही है, I just want to finish it up that कि जो बातें हो रही है ना, वो गलत नहीं हो रही. I also agree with it. But to that, I agree with that in IPL. एग्जैक्टली. In IPL, I agree with that. या He plays for one of the worst team managements, right? And he plays himself in a worse situation as well. So I don't deny that. The fact is a fact. But the problem is अग्रीड. when he wears an Indian jersey, then I हम्म. have totally different opinion with Virat Kohli. राइट. 2016 World Cup, he averaged 135. T20 World Cup या I'm talking about, right? या 2019, 2020, 2019 hit a sorry 2020 he hit a comeback 100. 2018 also he did well. Last World Cup he was our leading scorer, या. right? So he has all the points with him. एंड एक चीज आपको समझनी पड़ेगी, पीपल डोंट रियलाइज दिस यार, आरसीबी इन इट्स सेल्फ टीम इज नॉट डूइंग एनीथिंग. तो Yeah, जो वो उनको चांस भी मिलता है, चाहे वो 180 मिल के ही हो, अगर वो कुछ भी ना करे तो फिर वो 150 पे ही सारी गेम्स खत्म हो जाएंगी उनकी. तो थोड़ा सा yeah, अपने आप को एक्सटेंड भी करने के लिए भी उसको रुकना पड़ता है. बट फेयर इनफ, टू योर पॉइंट, विल डिस्कस दिस मोर इन इंडिया पॉडकास्ट. बट या, लाइक व्हाट एल्स ही कैन डू, आई डोंट नो. exactly. Yeah, so I guess we'll hold this up for like that India podcast thing because that will be a big thing. We'll try to arrange more guests and all, and we'll try to get more insights from different people. So the fourth game was a dead game, I think. As soon as CSK scored 210, I was like, and as soon as Pat Cummins won the toss and he decided to bowl first, man, you are playing against the strength. या. Your strength is to bat and demoralize the bowling attack you have in front. But he just chose to bowl, and this team can chase, man. And it was a slow wicket again. Once again, amazing batting by Rituraj Gaikwad, showing his class. Shivam Dubey doing his things. Daryl Mitchell made a comeback too, so he had a 50 as well. So that was perfectly CSK game, which everything went on. Tushar Deshpande ji is also taking wickets. Then Pathirana, it's very impossible to hit. And again, he took Klaasen, Markram, all these big guns. So pretty much a CSK dominated game. So now a big question arises. Out of these two teams, Karan, who is making playoffs? I know both are not going to make it. Is it It's CSK or very difficult. SRH? Yeah. It's very difficult, and I think it becomes a challenging question. I still feel कि Yeah, हैदराबाद ने आज अपने आप को उस सिचुएशन में जानबूझ के डाला है. आई फील लाइक वो ऑब्वियसली ड्यू फैक्टर की वजह से भी वो देख रहे थे, एंड ड्यू थी भी काफी, पर उनको yeah, चांस ही नहीं दिया उनके बैट्समैन ने. बट आई थिंक एक एक अच्छा भी है कि दे वांट टू टेस्ट देमसेल्फ इन द सिचुएशन जहां पे वो नहीं जीत रहे थे. तो मे बी yeah. अभी क्लैरिटी आ गई है, एंड दे विल गो बैक एंड डू देयर होमवर्क अगेन. बट इट्स अ वेरी गुड क्वेश्चन जो तुमने पूछा है. इन दोनों में आई होप दोनों जाएं, because I want Thala to be in the playoffs and I want my team to be in the playoffs. But Okay. I don't know, So man. This is a risky one. I'll give you more probabilities. So Hmm. they have both the teams have to win like 3 out of 5, Yeah. right? CSK is playing Punjab Kings twice, Gujarat Titans, Rajasthan Royals, and RCB. Whereas Hyderabad is playing Rajasthan, Mumbai, Lucknow, Gujarat, and Punjab. CSK obviously, after listening to this, उनके chances लग रहे हैं. Yeah, इवन राजस्थान के भी दिख रहे हैं, क्योंकि बाकी टीम से कंपेयर करूं तो इनकी परफॉर्मेंस अच्छी रही है. एज कंपेयर, राजस्थान इज वन जो बड़ा मुश्किल होगा आई थिंक सब टीम्स के लिए. बट मे बी राजस्थान अब चिल कर रहा है टॉप ऑफ द टेबल पे, हो सकता है वो एक आधी गेम लूज खेल लें. बट यू नेवर नो. yeah, maybe they can. And the only thing is, my advice for both of these teams will be don't underestimate Punjab Super Kings, man. They can't If you they can't. underestimate that team right now, it's these teams RCB and Punjab. RCB, I'll still say they are not peaking because still Virat is scoring runs for Yeah, them and yeah, all yeah. that stuff. जिस दिन वो आउट हो गया, आई थिंक इट्स अ गेम Exactly. डन. या But for Punjab, everybody is peaking at right time. Well, या. I'll say wrong time, like too late.
but it's right time for them and wrong to time for make other teams. right time for them to make some upsets, right? And interesting Yeah, तभी बन रहा है आज like अगर आप या तू टेबल ही देख ले. I know games in hand है and all, but second और last में सिर्फ 4 पॉइंट का ही डिफरेंस है. So exactly. so things can change, right? This is interesting. That's why teams Bro, want at least Rajasthan to keep on winning. बाकी if, नीचे वाले फिर देख yeah, लेंगे. like if they didn't have off-field issues, I would still back Mumbai to win like 5 out of 5. And they But can. yeah, and they still can. I can tell you, like every game, if they chase, they are chasing around 180 to 200. Every game they will do the chase. But यार bowling नहीं है ना. Problem यही है, Yeah, when they bowl, they give up 250. yeah, That is the problem. The games they have won, they have chased. Against RCB, they restricted them to 193. yeah, Even against CSK, they restricted them to 200, and literally that was their game to win. yeah. Pathirana bowled exceptional spell, and nobody supported Rohit. So, that's the hope, I guess. So, pretty much, we can say like the 6 teams in contention will be Chennai, Lucknow, Rajasthan, Kolkata, and pretty much Delhi, right? Delhi as And well. SRH. Yeah. Hmm. So these 6 teams will be, I think, in contention. And now And Mumbai, now RCB as well. but RCB can qualify, man. My man. Once they go back to सीरियस Bangalore मत ले again, इस बात को. once they go back to Bangalore again, they will again be screwed, man. And That's the that is problem. such a you know Disadvantage. बहुत डिसएडवांटेज है उनको कि अपने घर पे ही नहीं जीत पाते वो कभी. और Yeah. जो सीजन में वो पीछे 2-3 साल पहले सीजन हुआ है जब वो प्लेऑफ्स में गए हैं, दैट Ah, सीजन हैपेंड इन यूएई. UAE. Yeah, I know that. I know that because bigger grounds, Kohli can score more Yeah, runs and bowlers can restrict too. exactly. Well, anyways, let's see what happens. So tomorrow's prediction, Delhi कल versus है. KKR. Yeah, that's a very good match. Where is it? It's Eden Gardens, right? It's at Eden Gardens. Yeah. See, my only concern with Delhi has a momentum. कोलकाता is struggling with their bowling क्योंकि अगर आप देखो इस टूर्नामेंट में 2 बार उन्होंने 200 चेज करवाया उनकी बॉलिंग ने. एंड Yeah. अपार्ट फ्रॉम सुनील नारायण आई डोंट नो इफ एनीबडी इज डूइंग. अगर वैसी ही फ्लैट पिच हुई तो जेक फ्रेजर इनको खा सकता है फिर से. एंड Yeah. देन I बाय think so. चांस अगर सुनील नारायण पहले आउट हो गया तो देन आई थिंक कोलकाता विल बी इन लिटिल ट्रबल. I feel that it will be again decided on who's chasing. I think chasing team has an हाँ, advantage at या Eden's, या and ultimately the battle will come up to Sunil and the mystery versus या Kuldeep and Aksar. Yeah, That will be yeah, the I battle. agree. My heart says Delhi. I want to support Delhi. So let's Yeah. see how it goes because I feel like they are more fresh and energetic as compared to other teams right now, and I want to give them a chance. Okay. I feel KKR will win tomorrow, and especially when you are picking Delhi, I don't want to pick it. I यार don't want to मैंने touch तुम्हें it. बोला भी था मुझे छुट्टी दे दो, तुम देते नहीं हो, पर चलो एनीवेज अब It's ले okay. लिया मैंने. Anyways, but my player to watch out, definitely it will be Jake Fraser McGurk for Delhi. And for Kolkata, I think it will be Phil Salt. He came back in form. I think Yeah. he will score again. And What this is about the you? ground for him, right? उसको Yeah, अच्छी yeah, सूट yeah. कर रही हैं conditions and everything. Plus, I still feel he's booked his berth in the squad for England, but Yeah. just because that ground suits him, he will score again. So what about you? What are your picks? Same होनी थी, but I want to take Pant because I still feel Indian team contention is still on. But even though Pant is perfectly in, He's and logged in, man. He is logged in. I don't yeah, yeah, think. yeah. And Yeah. from there, I would say I want to give chance to see him perform again. It's Shreyas Iyer because last 2 innings उसने थोड़ी सी दिखाई है aggression and I want him to bat higher up but even जो नीचे वाला role है उसको suit कर रहा है. Maybe it's too late for him to give audition for that middle order for India. Oh, that is gone, man. Gone, but man. but Shreyas Iyer. Okay. Let's see Yeah. who wins. And pretty much, I think like if KKR is gonna win, I don't think Shreyas will be batting too much. So that's what I hope because if they score big up front, Dreyer is gonna move up, right? Yeah, Yeah. exactly. So let's see. So Crickbox will be back, guys. Please like, share, and subscribe. Please like it, man. Bye bye. Namaste.